Yes, please. So I'm sorry, it took me a while to got things into place. So what's the common answer? 1D Delhi? 1D Delhi? Is Yes, D sir. Delhi the D. right Yes, answer? sir. 1D Delhi? F block? D block? P block? F block? Do I need to elaborate this or you're happy with this? Because I've given you the entire, breakup of atomic numbers and all. So this should not be very challenging. Guess we can move on. Question 2. This one. D Delhi. D Delhi. D. Delhi. Yet again, D Delhi must be the right answer. D Delhi must be the right Yes. answer. You go about doing it like radon is 86. Radon is 86. So you'll want to add 86 plus 14 plus 1. This is 7s2. This is 7s2. This is 7s2 plus 2. So 86 plus 14 plus 1 plus 7 plus 2. Not 7 out here, plus 2 only. So this I reckon will give me 103. Now 103, according to the way nomenclature is done, and for 1, nil for 0, triumph for 3, 2D Delhi seems good. Third one, Option A. naturally group 16 is oxygen wala group. Group 16 is oxygen wala group. And oxygen wala group is P4. Now if it is fourth period, group 16, it will be 4P4. So above 4P4, you'll have 3P4. I think that is the logic at hand. 3A Agra will want to move on. Again, I've been very critical of this question, information based, but yet again, this is where NCRT is such an important book for JEE mails. They go to the extent that, the write-up which is there on Mendeleev in NCRT, and it mentions that he authors a book called Principles of Chemistry. This is a true statement. This has to be a false statement because everything about, Rutherford's theory and alpha experiment and Bohr's theory we're in the 20th century, whereas this is a man of the late 19th century. So naturally, B is false, and the required incorrect option. A, C, and D are true. That he invented accumulated barometer is also information from NCRT. I might have told you. People so many times would not know about this, but Mendeleev invented accumulate barometer. And all of this information comes directly from NCRT. We'll move on. हार्दिक बाबू पीछे क्लास में भी मेरे को लग रहा था है क्या सब लोग अपना अपना जेईई का सेंटर का मेरे को बता देना टाइम मेरे को बता देना सो दैट I could keep a track and the moment it gets over we'll have more advanced classes. X, Y, and Z 33, 53, 83. Come on, tell me. Option B. Bombay. 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 ये जितना जल्दी समझ में आ जाए कि आर्सेनिक है ये आयोडीन है और ये बिस्मथ है उतना बेटर है जितना जल्दी ये समझ में आ जाए इसके लिए ना पूरा प्रेडिक्टेबल का पिक्चर दिमाग में होना चाहिए 5B Bombay certainly is the right answer. 5B Bombay is the right answer. Iodine is a non-metal, arsenic is metalloid, Z is a metal, bismuth has metallic character. You have any question, any doubt, you can ask me if you want to move on. Anil anium. ये एकदम बच्चा वाला question है, but just in case you have ignored these small little things, you would lose marks. An is 1, nil is 0, again an is 1. So just go through very quickly the stuff which is there in NCRT about nomenclature of elements which are beyond 100. Atomic number 100. We'll move on. Atomic number 50. Atomic number 15. Naturally, atomic number 15 will belong to nitrogen. Number of valence electrons. Group number, valency, yes, please, quickly. Yes, please. I thought you would be able to do it. Everybody, I think you're not applying because you find it simple to answer.
B Bombay. Yes, but you need to respond for me to get going. For me to get going. 7B Bombay, 8 IUPAC names for 8%. कितना मतलब ना, it's like a very common question. And अब ये 9 को लेकर के ना थोड़ा सा ट्रिकी है. 9 के लिए ई नियम होता है, अन ई नियम. तो इसीलिए 119 का यू ई होगा, अन ई नियम होगा. Unilenium, unenium is 119 का हो गया. Unilenium will be 109, 107, and the last one will be, I guess, unnelium 110 होना चाहिए, मेरे को लग रही है. ये ना थोड़ा सा चीज है, मैं जनरली क्लास में नहीं पढ़ाता हूँ, बट बोलता हूँ एनसीईआरटी तो पढ़ लेना चाहिए. एलिमेंट एटॉमिक नंबर 120. एलिमेंट एटॉमिक नंबर ये 120. ऑप्शन बी बॉम्बे. बी बॉम्बे. ये कैसे करते हैं? 86 हम लोग देखते हैं कि रेडॉन का है, तो नेक्स्ट इनर्ट गैस जो होगा वो 118 होगा. ये एकदम कॉमन क्वेश्चन. दिस इज द नेक्स्ट इनर्ट गैस टू बी डिस्कवर्ड. एंड नेचुरली 118 के बाद 119, 11120, दिस विल बी ग्रुप 2 ओनली. ग्रुप 2 एंड टू बी प्रिसाइज ग्रुप 2A, अल्कालाइन अर्थ मेटल होगा. इनर्ट गैस अगर 118 होता है तो 119, 120 विल बी ग्रुप 2. Similarity in chemical properties of atoms of elements in a group of periodic table is most closely related to. ऑप्शन डी. Any day, its number of valence electrons. You know, in the same group, oxygen, sulfur, selenium, tellurium. I don't know how to explain this. P4 are also are going to have similar behavior. P3 are going to have similar behavior because they have the same number of unpaired electrons, the same number of valence electrons. P4 for 4, P3 का P3. 11. नॉट करेक्ट. ये पढ़ लेना एक बार अच्छे से. यहाँ पे नॉट करेक्ट बोल रहा है, नॉट करेक्ट. सर ऑप्शन बी बॉम्बे. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ क्लोरीन. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का. यू नो दिस. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो सबसे ज्यादा नेगेटिव क्लोरीन का होता है. सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है. ये नेगेटिव तो होता है, बाय डिफॉल्ट दिस वैल्यू इज नेगेटिव, बट मैक्सिमम क्लोरीन का होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट. ये फॉल्स ज्यादा अच्छा लगता है. फॉल्स. Ionization enthalpy decreases in the group of periodic table. What do you say, right or wrong? Down the group, ionization has decreased. True or false? True. Naturally true. Electronegativity of an atom depends upon the atom bonded to it. Obviously it's false. Fluorine का सबसे ज्यादा रहेगा. कोई भी एलिमेंट से लगा तो ऑक्सीजन का सेकंड होगा, उसके बाद नाइट्रोजन का होगा. 4, 3.5. I gave you values. A2O3 is amphoteric. NO is neutral. Neutral excelled. तो ये भी false हो गया. So naturally, A, C, and D are incorrect. A, C, and D are incorrect. Option B. I'll go with option B. SbCl5 is more covalent than SbCl3. SbCl5 is more covalent than SbCl3. The higher oxides of halogens also tend to be more stable than the lower ones. Come on, tell me. ऑप्शन ए. Both look correct. ये तो तुम्हारा पजाम रूल के हिसाब से बता सकते हो. You can talk about पजाम rule here. That naturally, with a more positive charge, you'll have more covalence. And the higher oxides are more stable than the lower oxides is also a fact. Higher oxides being more stable than the lower ones is a fact. Both are correct. 13. You can take your time. 13 seems to be a little longer problem. First, ionization in enthalpy.
सर ऑप्शन सी। मतलब ये ना इस कंट्री का सारा एग्जाम में पूछा ये क्वेश्चन। जस्ट सी सर, सी कैलकाटा। सी कैलकाटा। एनी डेट लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन बेरिलियम बोरॉन के आगे बढ़ जाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के आगे बढ़ जाता है। सच अ सिंपल रूटीन फैक्ट, सर्टेन सी कैलकाटा इज राइट। I mean, in a topic of this kind, you'll want to see that you get 100% right. You should not make any mistake. Total number of oxygen atoms in X and Y. 14. Again, a very simple question. सर 5। मेरे को लगता है यही होना चाहिए। हाँ सर 5। 5। यहाँ पर 4 और यहाँ पर एक 5। 5 should be the answer. Another 1 plus 4. Yes, please. ऑप्शन डी दिल्ली। डी दिल्ली। Delhi. The energy required to form Mg plus from magnesium is much higher than that required to produce Mg plus. Naturally sounds right. Mg plus is a small ion and carry more charge than Mg plus. Is the correct explanation as well. For a change, option A होता है generally यहाँ पर D दिया है. Both are correct and it's the correct explanation. We'll want to move on. Correct order of metallic character. Correct order of metallic character. 16. सर ऑप्शन सी। Naturally, group 1 is more than group 2 and down the group metallic character increases. Group 1 more than group 2. So group 1 more than group 2 and down the group metallic character increases. So beryllium से ज्यादा calcium का। ये ना पूरा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा सीरीज तुम लोग याद कर लो। यहाँ पर जैसा नेचुरली इज सर ऑप्शन डी दिल्ली। not very clear now because I think ये मेरा एयरपोर्ट में ना थोड़ा सा बैटरी का प्रॉब्लम है। Am I being completely audible to all of you? Can you all hear me loud and clear? यस सर। मेरा नोट्स ना देख लेना, पीरियडिक टेबल में मेरा जो नोट्स है, पीरियडिक टेबल में मेरा जो नोट्स है जहाँ पे मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करता हूँ, आई होप यू ऑल हैव माय नोट्स विथ यू, वरना मेरे को बोलोगे तो मैं सेंड इट ओवर, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास whether it's handy right now or not, but only for questions of this kind, मैंने पूरा हैंड रिटन नोट्स बना करके एनसीईआरटी फॉलो करके बनाया था। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। गिव मी अ मिनट। तो you will want to follow my notes. किसी के पास नहीं है तो I'll send it over to you. This is exactly what I have been referring to. और ये सारा वैल्यू एनसीईआरटी का लिखा हुआ है। ये देखो मेरा हैंड रिटन नोट्स में भेजा हूँ, वो ऐसा होगा। If you don't have it with you, you'll want to take it from me. ये पूरा एनसीईआरटी का वैल्यू मैंने लिखा था।
ऐसा हैंड रिटन नोट्स अगर क्लास अटेंड किए हो तो कॉपी किया होगा, वरना देखो इसमें जितना भी काम का वैल्यू था ना, और इसमें से ही वैल्यू आता है। मतलब फॉस्फोरस का 2.1, सिलिकॉन कार्बन का 2.5, आई थिंक ये दो वैल्यूज भी जरूरी है। एस्टाटीन का भी देखो 2.2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो समथिंग लाइक एस्टाटीन एंड phosphorus and astatine, phosphorus and bromine, these values are going to be a little confusing. I hope you're understanding me. Please ask for these notes if you don't have it. Discuss, are you there? Yes, sir. And rest of you, ये जो मैं नोट दिया था ना, ये सारा नोट ये सब पूरा घुमा फिरा के एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता। तो ब्रोमीन का 2.8, कार्बन का 2.5, एस्टाटीन का 2.2, फॉस्फोरस का 2.1। चलो भाई, हार्दिक बाबू को नोट्स चाहिए, मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। एक बार क्लास के बाद याद दिलाना बस, अभी भेज देता हूँ, रुक जाओ। अभी भेज दे रहा हूँ। ग्रंथ को चाहिए, ग्रंथ को ही भेज दो। So I think Granth and Hardik attending the class right now would have got the notes by now. वंश को भी चाहिए, वंश ही है ना ये? ऋषि तेरे पास होगा ये नोट्स पूरा? आंसर नेचुरली इसका डी है। ब्रोमीन 2.8, कार्बन 2.5, एस्टाटीन 2.2, फास्फोरस 2.1, सारा वैल्यू एनसीईआरटी से लिखा हुआ है। अब मेरे को क्लास दे दो, क्लास के बाद भेजता हूँ, सब कुछ चाहिए। युवराज अग्रवाल को चाहिए, सब कुछ चाहिए, मैं क्लास के बाद भेजता हूँ। हाँ, मैं क्लास के बाद भेजता हूँ। मैं भी मोटा मोटी सब याद ही कर लिया हूँ। ब्रोमीन, कार्बन, एस्टाटीन, फास्फोरस, ठीक है। फिर वैल्यू दिया है 2.8, 2.5, 2.2, 2.1, ये मेरे नोट्स में भी है, इसको एकदम डिलीजेंटली जान लो। और फास्फोरस का भी, एस्टाटीन का भी, ब्रोमीन का भी, सारा वैल्यू भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नथिंग आउट ऑफ एनसीईआरटी। और कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है इसको लेकर, क्या आगे बढ़ते हैं। जितना प्री ब्लॉक का भी क्वेश्चन आ सकता है ना जेई मेंस में, जेई मेंस में 13 से 18 ग्रुप है, आई थिंक पीपल विल वांट टू रिस्पॉन्ड। ग्रंथ हार्दिक करके सा टेटर में मैं भी देखा शायद 13 हाँ, टू 18 ग्रुप है। हाँ, उसका सारा क्वेश्चन मैं भेज देता हूँ आज। तुम लोग एनसीईआरटी पूरा रट जाओ, मैं देखता हूँ Yes, जितना sir. क्वेश्चन पॉसिबल होगा उतना करा कर दूंगा मैं। 18 बोलो। सर ऑप्शन बी बॉम्बे। ऑप्शन बी बॉम्बे। देखो, नियॉन इज अबव आर्गन। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थोड़ा बहुत आ भी सकता है। नोबल गैसेज, डाउन द ग्रुप नोबल गैसेज, they start making compounds. But if at all a question is which is the most noble gas, you say helium, then neon, then argon. And naturally fluorine का value ज्यादा है, so it's option B here. I don't think it's going to get you confused if you understand me. 19 सर सी कलकत्ता। Yes, sir. ऑप्शन सी। So tell me, how do you arrive at C? It's thallium oxide. How do you arrive at C? सर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज है, तो दैट इज
Obviously, down the group, they're all of the same group: boron, aluminium, gallium, indium, thallium. ये help करता है कि they're all of the same group, and down the group metallic character, reducing character, basic character generally increases. This is the most common question in the history of JEE chemistry. Quickly, order of radii. Sir, option D. Naturally D, but for isoelectronic species, if atomic number increases, naturally size decreases. That is the common term symbol for atomic number. Atomic numbers. The electron count being equal, a more positive nucleus will obviously hold it strongly. 21. Sir, option C. CD का बोलता है कि IE ज्यादा होगा. CD में successive filling of d orbitals take place. ये तो naturally true है. ये तो naturally true है. No, this has to be false. This has to be false because 3D में जब इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो D का स्पिनिंग इफेक्ट खराब होगा. So it will be easier to lose the electron. Yes or no? The first IE of 3D series elements is more than that of group 2 metals. I don't think so. Because in 3D, poor spinning effect and the first IE of 3D series elements is more than that of group 2 metals. Group 2 metals will have high IE. 3D में spinning effect खराब होने की वजह से और आसानी से जाएगा. 21C. 22. What's the common answer? Four. एसिडिक तो मैं बता ही दूंगा, पर उसके पहले ये जानना जरूरी है कि N2O और NO ये दोनों न्यूट्रल होता है. कैल्शियम ऑक्साइड, इवन CO, ये तीनों न्यूट्रल होता है. कैल्शियम ऑक्साइड Na2O नेचुरली आर बेसिक ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा. अब बचता है 1, 2, 3, 4 and 4 is the right answer. So the ones which I did not encircle or find neutral or basic. 22B Bombay, I think you're all there with me. I think you're all there with me. 23. 23. मेरे को लगता है ना बापन दा बीच में एक क्वेश्चन उड़ा दिया है. तुम लोगों को प्रॉब्लम शीट में शायद 24 होगा. I think you have missed out on one particular question. So this is question 24 in your problem sheet. Nevertheless, come on, tell me what's the common answer here? Option C. Is it once telling me C577? Yes, sir. And I think it's because sodium, magnesium, aluminium, silicon. It's because sodium, magnesium, aluminium, silicon, and you'll want magnesium to be more than aluminium. So this has to be the sequence like you had for lithium, beryllium, boron, carbon. Beryllium was above boron, but less than carbon. Here,
magnesium will be above aluminium, but less than silicon. And I think this is the whole idea of saying C as the answer. Aluminium should have a value more than sodium, but less than magnesium and silicon. I think that is the idea. (24) Okay, so now here he seems to have made up for the mistake. 23 होगा तुम्हारा प्रॉब्लम शीट में, और यहाँ पर भी naturally group 1 more than group 2 and down the group metallic character will increase. Come on, quickly tell me. These are simpler questions. 24. Option E. Say Agra. Yes. 25. Sir, option C. In which of the following pairs electron gain enthalpy, which I more commonly refer as electron affinity, are really the same or identical? Because down the group, naturally the values will get closer and closer. Above, the values will not be that close. So rubidium cesium will have a closer value. Sodium potassium will not have a closer value. Argon krypton, yet again noble gases का electron affinity तो होता ही नहीं है. So I'll go with A and C. I'll go with A and C, which is option C. I'll go with A and C, which is option C. If you have to contest any answer, or if you have your own opinion, you want to voice it. Don't simply buy a solution because it's supposed to be the right answer that's coming from your teacher. You have your opinion, want to tell me, but this is what I would have done had I been in your place. 26. Please tell me. Sir, option A Agra. All right. Dr. Saab कहाँ है? Second floor. Block C, C5 पूछिए ना. Flat C5. C5. Yes, please. 26. Sir, option A. Sorry, I had to. Yes, option. 26 option A. 26 option A looks good. 26 option A looks good. 27. I'll take a while to answer this. 27. I'll take a while to answer this. Please read these statements. Sir, D. Option D. B Bombay. आज कितना दिन बाद मौका मिला अब लेने के बाद समझ में आया एक कि बहुत सही पेपर ये पैकेज लेना तुम्हारा भैया कोई साइज 90 है रेडी वो सब रेडी फिर ये एक सपना ना भैया बस 5 मिनट अंदर all right I hope I'm being heard I hope that
I had to, take to someone very close to me. So I might just call over the class in the next few minutes. But before that, please respond. You can still hear me loud and clear. I also put my earpod on charge, so I'm not sure whether properly connected or not. Somebody would want to respond. Krishna, Aditya, Anupam, Anupama, Aryan, Ayush, Pragati. तो जल्दी बोलो यार, आगे बढ़ते हैं. छुट्टी देने के पास करने किसी का बात है, जल्दी बोलो. Can you hear me loud and clear? Yes, sir. चलो, thanks for responding. यार मैं देखता हूँ, पूरा रिकॉर्ड करके दे दूंगा. ठीक है, मैं पूरा रिकॉर्ड करके दे दूंगा. अभी मेरे को किसी से बहुत जरूरी काम है, तो अभी ये मैं फटाफट खत्म करता हूँ. 27 व्हाट्स द कॉमन आंसर? B. Yes, please. Sir, B Bombay. The first analysis is help you potassium is reserved that of sodium and lithium. Does not. The incorrect statement is lithium sodium D, Delhi. सही. Delhi. A does not have the lowest cost IE in its group. सही बात है. This is right. Xenon does not have the lowest IE. Xenon is here radon है. The first IE of atomic number 37 is lower than of atomic number 38. 37 क्या होगा? कौन सा जल्दी बोलो. Sir, D, Delhi. 37 का IE कम है. सही बात है. ग्रुप में कम होता है. The first IE of gallium is higher than the peak of element number 30. Atomic number 30 is zinc. Gallium is 31 ना. चलो आना बोलो. देखो A, B और C तो all the three are true. So many times you also answer in this form, all the three are true. You want the incorrect statement, the obviously would look like a choice. Again, I'm thinking whether the better was solved with gallium higher than D block of 30. Gallium higher than D block of 30. ये gallium कम हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. 30 करके आप छोड़ दूंगा. मतलब अभी छोड़ दूंगा. 28, 28, quickly. Sir, option C. Is it option C B. or is it option B, Bombay? Yeah, ये ना ये mistake गड़बड़ है. This is a mistake you want to avoid. The correct order of first IE. Naturally यहाँ पर half filled वाला concentration वाला बात होगा. उसके बाद A होगा. और rather C के बाद में DG होगा. A more than B. I'm sorry, मेरे को लगा D होगा यार. B right है. मतलब if I look realistically, you period 3 है, so it's going to be sodium है. Please correct me if I'm going wrong. This is magnesium. This is aluminium, I reckon. This is phosphorus, and this is sulfur. Yes or no? Magnesium more than aluminium. Silicon, and then phosphorus more than sulfur. So this is option B, and this is option A. So C, D, A, B. Option B is right. Yes, who said B in the very first stage? B कौन बोला था? B कौन बोला था? Come on, tell me. Somebody answered it correctly in the first place. B is right indeed. 29. An element A of group 1 shows similarity to an element B of group 2. If A has maximum hydrogen enthalpy in group 1, then B is. Yes, please. Sir, A, magnesium.
And why do you think so? Why do you think so? Sir, diagonal relationship with Diagonal- lithium. Diagonal between Sir, lithium has highest hydration enthalpy, so diagonal relationship with lithium. naturally maximum hydrogen enthalpy is for the smallest one. And the smallest one in group one is lithium. So lithium with magnesium. Yes, you're right. We want to move on. 30. I will want to stop at 30 today. I'll carry on with this maybe at the next opportunity, or I'll get it recorded, share it with you. मैं तीन लोग कभी क्वेश्चंस ना जल्दी जल्दी बना के देता हूँ और ये जो क्वेश्चन मैं बना के दूंगा पहले ग्रुप 13 14 का जो कि क्लास 11 का सिलेबस में जो सबके लिए होगा और उसके बाद फिर 12 का सिलेबस वाला भी अगला 2 3 चल चलो भागना करो 30 including molecules go and take a double of the sun take a substory. What do you find the statement? True or false? I mean, it's a very confusing statement in the sense, the first picture which you'll have in mind is you have chlorine and chlorine. But trust me, if the atomic radius is R and this is R, you get covalent radii as R plus R by 2. So it's eventually going to give you R only. So the covalent radii is the same as atomic radius. So this gives a little, presented as, but it's incorrect. It's false. The two are the same. Radius of anionic species is always greater than the presence atomic radius is fertility. So many times I'll tell you, an anion is always bigger than the neutral species is going to be bigger than the, cation for Z by E ratio. So statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. I want to stop here because I have somebody to attend to. I'll carry on with the rest of the questions at the next opportunity or get it recorded and then share it with you. Thanks for attending the class. Stay healthy. बाकी मेरे को व्हाट्सएप पे दोनों ग्रुप भेजिए और नोट्स रिक्वेस्ट भेजिए मैं नोट्स भेज दूँ मिलते बच्चे लोग सी यू देन बाय बाय